Good morning students. Today's topic is peritoneum. Peritoneum is that part which is similar to pleura and pericardium respectively in consideration with lungs and heart. What is pleura to lung and what is pericardium to heart is what is peritoneum to the visceral organs of the abdomen and pelvis. So what is peritoneum by definition? It is a serous membrane which is lining the abdominopelvic cavity. This whole is abdomen and including the pelvic cavity. It is a single layered serous membrane which is lining the abdominopelvic cavity. It's a layer of serous membrane lining the abdominopelvic cavity. Now as in pleura, what happens is, if this is the balloon, this is the lung which is engulfing it, it slowly becomes bilayered, bilaminar. Outer one is parietal, inner one is visceral. The same thing happens with peritoneum. The organs start to develop in the peritoneal cavity. So the part which is close to the organ, that layer of the peritoneum which is close to the organ becomes the visceral layer or the inner layer, whereas the one which is surrounding the abdominopelvic cavity, outer one, becomes the outer layer or the parietal layer. So let us see how it becomes. For example, if this is your peritoneum, this is the developing organ. This is the peritoneum, this is the developing organ. The next stage, what will happen? This organ will try to insunate inside. As it insunates inside, it takes up the part of peritoneum along with it. Now we have two layers now. This is the outer one, which is the parietal one. This is the inner one which is close to the organ which becomes the visceral, same like that of the pleura. Now this is completely engulfed or peritoneal organ which has an outer parietal layer and an inner layer, visceral layer, which is covering the organ. This is the visceral layer. The only difference between the pleura and the peritoneum would be whenever an organ tries to insunate inside, it takes along with it the peritoneum and lags behind a double layer fold of peritoneum which is called as a fold. This fold is called as varied names. We will see the classification of it. In case if this is a intestine, this double layered fold would be called as a mesentery. If this is a colon which is taking the peritoneum inside, this double layered fold will be called as a mesocolon. In case this is stomach which is taking the peritoneal fold along with it inside, this bilaminar layer will be called as omenta. So there are various names given to the ligament which is bilayered, which is nothing but that part of the peritoneum which is dragged inside by the viscera once it goes inside. Okay, so the layers of peritoneum, an outer layer and inner layer. Outer layer respectively called as the parietal layer, inner layer respectively called as the visceral layer. The outer layer is fibroelastic. The outer layer is fibroelastic in nature. It has the property to stretch. Our abdomen stretches. When we eat a meal, when we have a hearty meal, our abdomen stretches. That is given by this fibroelastic layer. That is the outer layer of peritoneum. The inner layer is a very simple, thin, simple squamous epithelium. It is simple squamous epithelium which is called as the mesothelium. Alright. So an outer layer which is called as parietal layer.
It is made up of fibroelastic tissue. And inner layer, which is also called as the visceral layer, this is very thin layer. It is also called as the mesothelium. In many books, when you go ahead, they will not discuss it as visceral peritoneum. They will discuss it as mesothelium. So mesothelium is nothing but the visceral layer of peritoneum. It is made up of simple squamous epithelium. You know simple squamous epithelium, right? Flattened cells with nuclei like this. You remember simple squamous epithelium? So the inner layer is mesothelium made up of simple squamous epithelium. One more characteristic feature of peritoneum is it has a gender difference. Till now we have not considered pleura, pericardium having any gender difference. Remember, pleura आदमियों में औरतों में एक जैसा, बलून उसके अंदर लंग जा रहा है, पेरिकार्डियम उसके अंदर हार्ट जा रहा है. हमने वहां कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं करी कि मेल में और फीमेल के अंदर प्लूरा या पेरिकार्डियम अलग होते हैं. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पेरिटोनियम. देयर इज अ जेंडर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. The male peritoneum, which is lining the abdomen and the pelvic cavity, is said to be a closed sac, whereas that of a female is said to be an open sac. I will just explain, but just mark, this is open, oh sorry, this is closed and this is open. Now how is this open? The female reproductive organ, we all know, consists of what? Uterus, fallopian tube, cervix, vagina, right? In males, it is nothing but a closed pouch, alright? In females, what happens? Through this fallopian tube, if you start to enter from the exterior in the female, through the vagina, through the external os, through the internal os, through the uterus, and through the fallopian tube. The fallopian tubes are open at the infundibulum part. That part is open into the peritoneal cavity. Hence, in females, the peritoneum is said to be open. It is open to exterior, to outside world. Whereas in males, there is nothing like this which is open. Everything is a closed channel. If you try and retrogradely go through the urethra in the male, it will go down directly to the bladder. Bladder is close to the ureter, it is closed into the kidney. There is nothing which is open in males as a continuous channel. But in females, because of the fallopian tubes, these fallopian tubes which are hanging on the ovaries to collect the eggs at the time of menstrual cycle, they are open, they are never closed. Therefore, through the fallopian tubes, the peritoneum in a female is open. This is an MCQ question. So please remember this. We have not discussed this in pleura. We have not discussed this in pericardium. But in female, the peritoneum is said to be open. This is the male peritoneum which is closed. And this is a female peritoneum. A schematic diagram. This is male, this is female peritoneum, this is the uterus, this is the cervix, this is the vagina. These are the fallopian tubes. The ends of fallopian tube, they are fimbriated and open. The ends of fallopian tube are fimbriated and open, and therefore they merge with the peritoneal cavity. So the peritoneal cavity is said to be open. You can go from here, you can go like this, you can go and enter the peritoneal cavity. Hence, this is an open channel, this is a closed channel. Now we'll see the classification of peritoneum after this.
to understand the classification of peritoneum, that is how the folds are formed, why the folds are formed, we should consider the embryological basis of how the peritoneum develops. अगर हमने एम्ब्रियोलॉजी समझ ली पेरिटोनियम की कि पेरिटोनियम बनता कैसा है, अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज फोल्ड्स विल बी वेरी सिंपल. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप एंड अंडरस्टैंड पेरिटोनियम डेवलप कैसे होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग गट. What I have drawn here is, this is the anterior abdominal wall, this is the posterior abdominal wall of embryo, and there is a hanging straight tube which is nothing but the developing gut. ये developing gut है. gut हमेशा से इतना coiled तो था नहीं. जब starting हुई gut की बनने की, it started to develop like a straight pipe. So this is the straight pipe which is developing. ये वो डायग्राम इसके पहले याद रखना जो हमने देखा था जिसमें इंडेंटेशन ले रहा था वो अंदर. एक हमने we drew this diagram, right? जिसमें हमने देखा कि ऑर्गन अंदर इंडेंट कर रहा है. इट इज समथिंग सिमिलर लाइक दैट. ये एक लंबा सा पाइप है जिसने पेरिटोनियम के अंदर इंडेंट करना शुरू कर दिया. अब ये जब इंडेंट कर रहा है तो ऐसी ये डबल लेयर्ड फोल्ड बन रही है. दिस डबल लेयर फोल्ड ये हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, ऐसे सेक्शन में, इसलिए हमको ये दिख रहा है कि ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये हमने कट सेक्शन लिया अगर यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ये गट बीच में लटक रही है, ये गट बीच में लटक रही है यहाँ पर. नाउ दिस गट दोनों तरफ से देखो, पेरिटोनियम के दो फोल्ड्स लेके है. ओके, दिस इज पेरिटोनियम जो वो अंदर अपने साथ लेके गया. पीछे भी है एक हैंगिंग और आगे भी है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से उसको जोड़ता है. दिस इज कॉल्ड एज mesogastrium. This is called as mesogastrium. The anterior one is called as ventral mesogastrium. The posterior is called as dorsal mesogastrium. This is nothing but double fold of peritoneum जो गट को बीच में पकड़ के चल रहा है. This is the first stage of development. Later on what happens, and these red are the respective arteries which are coming from the abdominal aorta जो इनको supply करेंगी. Celiac trunk, superior mesenteric and inferior mesenteric. अभी ये सिर्फ एक developing tube है. Now what happens next stage, come down here. ये ट्यूब अभी भी वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम और डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम में हैंग कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्गन डेवलप शुरू होना है. अभी वो शेप ले रहा है, जो ट्यूब है वो शेप ले रहा है कि आगे जाके इसमें होगा क्या. सो वी ऑल नो दैट द गट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट इज दैट पार्ट विच डेवलप्स द ईसोफेगस, स्टमक एंड इनिशियल पार्ट ऑफ द ड्यूodenum. Midgut is that part which forms the majority of jejunum and ileum up till the transverse colon, and hindgut is the part जो बाकी का पूरा बनाता है, ascending, descending, sigmoid colon, rectum, all this is made by the hindgut. तो यहाँ पर छोटा सा डेवलपमेंट शुरू हुआ. This is the foregut part which is supplied by the celiac trunk. यहाँ पर ये छोटा सा देखो बड डेवलप होना शुरू हो रहा है, दैट इज ऑफ स्टमक. अब यहाँ स्टमक अपना रूप लेना शुरू कर रहा है. दिस इज इनिशियल ऑफ मिडगट. दीज आर द लूप्स ऑफ मिडगट जहाँ से इंटेस्टाइन बनना शुरू होंगी, स्मॉल और लार्ज. वी हैव एन 8 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन. तो 8 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन इस तरह से बनना शुरू होती है, लाइक अ स्मॉल आउटपाउचिंग. एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द sigmoid colon and the rectum. Okay, the lower part. Foregut, midgut and hindgut. अभी भी they are hanging with, this is what? Ventral mesogastrium. This is what? Ventral mesogastrium.
एंड सिमिलरली पीछे दिस इज डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब अगले स्टेज में क्या होगा, मिडगट ज्यादा बनना शुरू हो गया। अब मिडगट इतना बन रहा है कि इट विल स्टार्ट टू आउट पाउच। फिजियोलॉजिकल हर्निया करके एक चीज होती है। अब ये स्टमक अच्छा खासा बन रहा है। फोरगट में स्टमक अपना शेप लेना शुरू कर रहा है, मिडगट में इंटेस्टाइन जो है लूप्स ज्यादा बन रही हैं। दिस इज द पॉइंट जहां पर फिजियोलॉजिकल हर्निया होता है। फिजियोलॉजिकल हर्निया आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। दैट इज व्हेन the midgut starts to develop so much that it has to herniate outside the anterior abdominal wall of the fetus. Okay, this is physiological hernia which is present. So this is the developing midgut, this is the developing hindgut. Similarly, celiac trunk, superior mesenteric and inferior mesenteric, which are respective arteries to foregut, midgut and hindgut. अब इसमें एक फर्क ये आ रहा है, अभी तक एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हमने देखा, we saw that the ventral mesogastrium was present completely, dorsal mesogastrium was present completely. Now, क्योंकि मिडगट बाहर लूप कर गया, इसलिए ventral mesogastrium will only be present here. It will not be present here now. That's the only difference that is going to come. That is why, क्योंकि मिडगट बाहर लूप आउट कर गया, फिजियोलॉजिकल कर गया। So, यहाँ पर बस इस डायग्राम से इसमें एक ही फर्क है, that this is the ventral mesogastrium now. There is no ventral mesogastrium here. लेकिन posteriorly there will be dorsal mesogastrium till the end. Only ventral mesogastrium here. यहाँ पूरे में dorsal mesogastrium is present. Did you understand the concept? Here it was a single tube which was hanging by the peritoneal, double-layered peritoneal fold. Anterior ventral mesogastrium, posterior dorsal mesogastrium. Slowly this tube starts to take its shape. Initially छोटा सा stomach starting to develop. छोटा सा midgut trying to loop around, छोटा सा hindgut which is going to give a loop, understand, along with their respective arteries. Then later on midgut starts to outpouch. Because of the outpouching midgut, ventral mesogastrium recedes and it will only be present in the upper part, that is only till the foregut. अब midgut और hindgut को ventral mesogastrium नहीं है. It is only attached to the posterior abdominal wall through the dorsal mesogastrium. अब आगे के जो changes होंगे वो इस लेवल के ऊपर के changes होंगे जो अब हम देखते हैं. Okay. After this stage, what happens? We will only consider now the foregut. अब हम midgut और hindgut के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, because यहाँ पर तो जो होना था हो गया. Ventral mesogastrium खत्म हो गया. They are only suspended by a dorsal mesogastrium. That's it. ठीक है? We are only considering now above, that is of the foregut. Now what happens in the foregut? Now the stomach starts to take its proper shape. Meanwhile क्या होता है? Ventral mesogastrium और dorsal mesogastrium में respectively simultaneously liver और spleen डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. लिवर और स्प्लीन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. अब इस डेवलपमेंट के कारण अगर हम सिर्फ एंटीरियर पार्ट की बात करें, दिस इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, दिस इज द अम्बिलिकस का इंडेंटेशन दैट वी हैव गिवन फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड दिस इज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. Between the anterior abdominal wall and the stomach we have liver which is now started to develop. उसके कारण
The ventral mesogastrium divides into two, an anterior part and a posterior part. The anterior part, which is connecting the anterior abdominal wall to the anterior surface of the liver, is now called as the falciform ligament. This ventral mesogastrium is now being given name. जैसे कोई लंबा हाईवे है, उसके बीच में शहर आ जाते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं ना, आगरा बॉम्बे हाईवे। अब भले ही वो हाईवे दिल्ली तक क्यों नहीं जा रहा है। सो दिस mesogastrium बड़ा है, लेकिन अब उसके अंदर एक ऑर्गन डेवलप हो गया, तो अब हम उसके आगे और पीछे उसको नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से लिवर के एंटीरियर सरफेस के ऊपर जो लिगामेंट, यानी जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम था, ये वाला बाइलैमिनर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, उसका नाम हो जाएगा falciform ligament. This is called as falciform ligament. ये falciform ligament की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है that it will only go up till the umbilicus, नीचे नहीं जाएगा। This falciform ligament is sickle shaped. सिकल मतलब हसिया, हसिये के शेप का है। From the posterior inferior margin, it will go down to the umbilicus, forming what? This is the falciform ligament. From the posterior surface of the liver, now going to the anterior border of the stomach. सेम वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम ही है, हमने नाम दे दिया। अब इसका नाम है लेसर ओमेंटम। Now this is what will be called as the lesser omentum. Now remember, this lesser omentum is going from the liver to the stomach as well as the initial part of the duodenum. इसलिए इस लिगामेंट को अलग नाम भी दिया है, हेपेटोड्यूडेनल, हेपेटोगैस्ट्रिक। जो पार्ट लिवर से स्टमक पे जा रहा है उसको बोलते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक, और जो पार्ट लिवर से डियोडेनम पे आ रहा है उसको कहते हैं हेपेटोड्यूडेनल। और हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोड्यूडेनल ये सब मिला के लेसर ओमेंटम कहलाते हैं। सो दिस इज लेसर ओमेंटम। हम इसको लेबल करेंगे। This part is hepatogastric, hepatoduodenal, sorry. And this part between the liver and the stomach is hepatogastric. और ये दोनों मिला के लेसर ओमेंटम। आया समझ में? पूरा का पूरा पार्ट इज लेसर ओमेंटम। ओमेंटा शब्द वहां यूज करेंगे जहां स्टमक आ जाएगा। स्टमक से रिलेशन में जो भी पेरिटोनियल फोल्ड होगा वो ओमेंटा कहलाएगा। हम फोल्ड बोल रहे हैं बार बार बच्चों, फोल्ड का मतलब बायलैमिनर। जो हमने पहले डायग्राम के अंदर देखा था, विसरा अंदर जा रहा था तो उसके साथ पूंछ की तरह दो लेयर पेरिटोनियम के अंदर जा रहे थे। that is why we called this as ligament, because it is bilaminar. So this part between the liver and the stomach is called as hepatogastric. This part between the liver and the duodenum, hepatoduodenal. और इन दोनों को मिलाने के बाद what becomes is lesser omentum. This is nothing but lesser omentum. समझ में आया? So this is falciform ligament. This is lesser omentum. ठीक है?
come down posteriorly. Posteriorly between the posterior border of the stomach and the posterior abdominal wall. What we have here? Spleen. ये developing organ कौन सा है? Spleen. Now just see spleen और liver दोनों के साइज में कितना फर्क है. Liver is a large organ, spleen is a small organ. And contradictory to the anterior part, सामने की जो बॉर्डर है स्टमक की वो छोटी है. पोस्टीरियर बॉर्डर स्टमक की कितनी लंबी है. तो ऑर्गन तो छोटा सा है और बॉर्डर इतनी बड़ी है. अब इसके कारण पोस्टीरियर बॉर्डर से जो पेरिटोनियम के रिफ्लेक्शन निकलते हैं वो 3 जगह जाते हैं. 3 जगह. एक, नंबर 1, दिस इज डायफ्राम. सो स्टमक के ऊपर के पार्ट अबाउट द स्प्लीन, पेरिटोनियम का जो रिफ्लेक्शन है टू द डायफ्राम is called as gastrophrenic ligament. Gastrophrenic ligament from the superior fundic part of the stomach to the diaphragm. जो रिफ्लेक्शन है पेरिटोनियम का उसको कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक. Phrenic is always the term which is used for diaphragm. So gastrophrenic. यहाँ पर देखो स्टमक और लिवर इन दोनों के सरफेसेस लगभग सेम थे, इसलिए हमको लिवर के अलावा और कहीं भेजने की जरूरत नहीं थी. लेकिन स्प्लीन लिवर के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा है और बॉर्डर इतनी बड़ी है. दैट इज व्हाई इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3. तो ये तो हो गया नंबर 1. आया समझ में? अब स्प्लीन और इसके बीच का जो पार्ट है इसका नाम है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. नंबर 2, गैस्ट्रोस्प्लेनिक. नंबर 1 क्या था? गैस्ट्रोफ्रेनिक जो डायफ्राम. नंबर 2 स्प्लीन के साथ. अब ये इतनी सारी हमारे पास में बॉर्डर बच गई है पीछे स्टमक की, पोस्टीरियर बॉर्डर. यहां से एक बहुत बड़ा लिगामेंट निकलता है विच इज कॉल्ड एज द ग्रेटर ओमेंटम. दिस इज द लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम which is coming from the posterior border of the stomach going down, enveloping itself and going posteriorly, which is called as the greater omentum. So this number 3, greater omentum. Can you understand? 3. Number 1 diaphragm, gastrophrenic. Number 2 spleen, gastrosplenic. Number 3 greater omentum. ये छोटा था इसलिए इसका नाम था lesser omentum. ये बड़ा है इसलिए इसका नाम है greater omentum. This greater omentum is so large that it will cover all the anterior surfaces of all the organs of the abdomen. There are very few very good characteristic features of greater omentum, and how the greater omentum is formed we will consider next time.